हेलो गाइस, अगर एक नारुतो इमेज दिख रही है तो आई एम लाइव नाउ. If you guys are able to see this image, then drop something in the live chat. Okay. ठीक है, तो let's start with the thing now. Okay, तो is my screen visible now? Okay guys, okay, so let's begin with this thing. I guess there is a delay, क्योंकि while I'm streaming and the thing you guys are being seeing. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन में अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो द फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट टू नो द बैक एंड थिंग. ओके, तो सबसे पहले आपका जो बैक एंड होता है वो उसमें आप लोग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखते हो, तो उसके लिए आप लोगों को एक आई चाहिए होगा, राइट. तो रीमिक्स आई, तो यहाँ भी जो लिंक आता है सेकेंड नंबर पे, दिस रीमिक्स आई, ये आपका होता है जहाँ पे आप एक्चुअल में अपने प्रोजेक्ट्स लिखते हो. ठीक है, तो यू कैन ओपन अप दिस थिंग एट remix.ethereum.org. ओके, एंड लाइक अब यहाँ पे आई कैन मेक अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस फाइल. लेट्स सी नोट्स डॉट सोल. ओके, तो अभी हम लोग एक बेसिक नोट्स एप्लीकेशन बनाने वाले हैं. तो दिस नोट्स एप्लीकेशन, using this application you guys can like create your own notes and keep them like in your own vault. Okay, so some sort of कुछ उस तरह से. तो सबसे पहले we will be writing this smart contract and then we will be learning to create a basic front end while integrating this smart contract. So this smart contract is a back end, right? So while starting with this smart contract, first of all we'll be डिक्लेयरिंग कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है व्हाट इज़ द लाइसेंस फॉर दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. तो MIT इज़ अ काइंड ऑफ लाइसेंस विच डिनोट्स कि ये जो कोड है लाइक एज this code will be deployed on the blockchain, so this will be accessible by everyone, right? So we have to declare some sort of license for this code, and MIT means that this code could be accessed by anyone. They can just manipulate this code and other stuff. तो अब हम लोग डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे हमारा कंपाइलर वर्जन जो हम लोग को यूज़ करना है इस कोड को कंपाइल करने के लिए. तो फॉर दैट थिंग आई एम यूजिंग द वर्जन 0.8.19. अब this is a file explorer. In this remix ID, this is a file explorer and this is the compiler thing. तो यहाँ से we can navigate all the compiler features, we can select all the compiler. So whatever compiler we are declaring over here, we should be selecting that only. तो for now like I am selecting this 8.19 because ये वाला जो compiler है ये अभी तक में like जो आपके latest compiler भी रिलीज़ हो गए हैं उनमें सबसे stable यही वाला है. तो इसके नीचे we will be looking on कि what all things do we need in a notes tab. In a notes tab, what all things do we need? So first of all, if I am like kind of making a notes D app, I'll be needing to create multiple user profiles. तो create user profiles, फिर उसके बाद में अगर multiple user profiles हमने बना दिए हैं तो हर user profile के लिए we need to create multiple notes. तो we create multiple notes and the third thing should be to fetch all my notes. Okay, so all the notes that you have created should be fetched also now. So now in order to write this smart contract, all of the like this Solidity is a programming language like all the other programming languages, Java, C++. So most of the things are same in here too. So like you create a class in Java while beginning, so similarly we create the contract. We will be specifying that this is a notes tab and then now this is a contract, this is a contract. तो अब इसके अंदर whatever we will be writing will be deployed like first of all it will be compiled and then it will be deployed on the blockchain. Okay,
So now let's create user profiles. So for creating user profiles, what do we need? Firstly, we need a struct. So this is struct, I'm naming it at collection nodes. तो अब इसको we can imagine it like this is a collection of notebooks. Okay, this is a collection of notes. Imagine it like a notebook. So suppose all of you, like there are three different people, 1 2 3, and all of these three people are actually holding some sort of notebook with them. So one can only access his own notebook, 2 can access his own notebook, 3 can access his own notebook. So all of these notebooks are individual to them. Okay, and all of these notebooks will be consisting multiple number of pages, and now all of these pages will be holding some sort of notes. So first of all, I am creating this notebook that I am telling you about. So this notebook will be having a collection of notes, right? So it will be having a collection of notes, and it will be like representing its owner. So its owner would be the address who have deployed this thing. Now over here I have used this thing. This is an array of struct. Okay, so I have to also declare this struct, right? These will be the individual pages of a notebook. So I'll be saying that it will be containing string content. So each of these notebook will be having its own unique ID. So I have to add that thing too. So that thing would be uint notes ID. Now what is this uint? Uint means that it is an integer that can never be negative. We are using this solidity language on the blockchain, and you know, like blockchain is linked with so much of the financial aspects, right? So while dealing with financial aspects from your code itself, we need this new data type uint, which means that it can never be negative. So this means unsigned integer. Now we have this notebook that I was referring, and now every of the notebook will be having its own owner, and each of these notebook will be having multiple pages. Okay, and all of these individual pages will be having some sort of content, that is our notes and a notes ID. Now I'll okay, so now this user profile things is done. What is now left is to create an actual function that can like input the notes to this notes tab, right? So I will be needing this function set notes and public. So this public keyword over here specifies that this set notes function could be accessed by anyone on this blockchain. So whatever blockchain I am currently deploying this contract on, any of the user that is trying to play around can will be allowed to access this set notes function. I can also write it as private, but if I am declaring it as private, then only the functions from this smart contract will be allowed to access this thing. So now the next function we will be needing is get notes. Get notes again, that would be public. So these are the two functions. So from here I'll be setting the notes, and from here I can fetch all my notes. So initially to set a note, first of all I need to pass an argument, right? So that would be the content of the note. Now the content of the note, I need to specify its data type too. So its data type should be string. But in Solidity, whenever you are declaring uint or struct, you do not need to store them inside the contract. You do not need to specify its storage type. But for a string, you need to specify its storage type, because the strings are like kind of big in size as compared to struct or these address or uint. So we need to specify this. Is this thing will be stored in storage, or will this thing be stored in memory? So both of these keywords, they have like their own meaning. So for the memory thing, while I am calling this function, so this content variable would be having its value for the duration of the call of this function, and after that this wouldn't be having any kind of value. So we don't need to store this in this contract, so we are specifying it as memory. And also, like, memory will cost less gas fee as compared to the other storage thing. Okay, now I'll be declaring a counter. So why do I need a counter over here? Guys, if I'm having a notebook, I need to iterate through all the pages of that notebook, right?
So while I am setting a note in that notebook, first of all I need to know that how many pages of that notebook are filled. So for that I will be needing a counter. So this counter will be helpful in order to track this notebook, like how many pages are filled and how many pages are not filled. So for that I will be needing this counter. So also at the moment we haven't declared like how will I be linking the user profile. I have created the notebook, I have created the pages of the notebook, but I haven't created a way where I am able to link the user to the notebook. So on the blockchain everyone is having some sort of address, right? So this wallet has this address, the other wallet will be having some other address. So all of the wallets on the blockchain have some sort of address, and through these address we have our own user profiles. Now I'll be creating a mapping. So what is a mapping is? A mapping is something that will be creating a connection between both of these things. Suppose let me give you an example, then that thing would be way more clearer. Address to collection. Okay, so I've given this thing a public type 2 because I want this mapping to be accessed by anyone. Anyone can look at the collection of any address. And now this thing says that the address is the user, right? The address is mapped to a notebook. So this was a notebook, right? An address is now mapped to a notebook. So I can access any of the notebook by using this address. So let's take a quick example over here. I am now using this same thing over here. Now while trying to access this thing quite later in our code, we need to declare it something like this. We need to use this square brackets again. So in the square brackets, now I will be declaring the message.sender. So what is message.sender? Message.sender is the user who is calling this function. So suppose I want to call this function. So I want to call this function. In that case, I am the message.sender. We are not defining any individual address for this thing. Okay. So now once I have defined like whose notebook I want to access, now I want to access the length of this notes array, right? So I'll be writing notes because now I'm into this thing, and now I'm into this thing. Now I'm writing length. Now this thing would give me the length of this notes array. Now I know like how many pages of the notebook are filled, so I can just go further. So in order to go further, I will be treating this thing. Now to the next page, I want to enter my own data. So how will I be doing this thing is like I will be again calling this thing with message.sender, and as I have called this thing as message.sender, I have again got access to my own notebook. Now I'll be calling this okay, I won't do the equal to thing. Instead I will just access this notes array by writing this, and I'll be using push. So push is a kind of thing that you'll be using on your arrays. So dot push is something that is usable on the array. So before this I've also taught you another function for the arrays, that is dot length. So dot length will give you the length of the array. Dot push will push any of the item into the array. So now I can just like write anything over here and push that into this array. So this array is of data type nodes, and this I can only push a struct in this, right? So I will be having a struct. Now this struct is taking two things, content and the nodes ID. So for this content and the nodes ID is something like a counter. Okay, so here it is. We can also compile this thing. तो अब हमारा ये सेट नोट्स का सेक्शन तैयार हो गया है. एनी यूज़र कैन कम अप एंड क्रिएट हिज ओन नोटबुक and add data to his own notebook. So first time the user is coming, he don't have any pages in his notebook, then this thing would be returning 0, and this thing would be incrementing to 1. That is, the first page is now created and the data is now set to the first page. So it's just like that. Now the getNotes function, we again will be needing to get track of how many pages the user have created yet. Okay, so this getNotes
function, this thing, first of all, like, we will be needing to get the length of this whole notebook that is present with us, right? So if now I know the length of this notebook for the user, whoever the user is, so that is message.sender. And now I will be iterating through the notebook. Okay, so in order to iterate through the notebook, I have to create a loop which is working something like this. Now one more thing, this get nodes will be returning some sort of thing, right? So it would be returning some sort of thing, so we need to also specify its return type. Now in Java, if you know that, like Java, C or C++, all of these languages, you specify return type using int, uint, void and things like that, but over here we will be specifying the return type using this returns statement followed by the return type. So it will be returning a string, but this wouldn't be a string alone, this would be an array of strings, because we need to provide all the content of all of these nodes now. So that's why now I will also be needed to create an array inside this function, because it is returning an array of a string, so there has to be some array of strings inside this function as well. Now this is a syntax which is mostly similar to all programming languages. I'll be specifying the length of the array, okay, sorry for the little pause, I was actually checking out the chats. I'll be replying to the chats later on once I've completed with this thing. So right now I have declared this array of strings. Now once I have declared this array of strings, I'll be using this variable, and now I'm using this variable. I am at the position I, so it is iterating through all of the nodes, or the whole of the notebook. It is iterating through all of the nodes individually one by one. Now I am using this array which is of the same size of the notebook, and in the same I'm using this I, which is the iterator, and it is now iterating through all of this collection. So address to collection, I will be again using this mapping. Now I'm talking about the message.sender, right? Message.sender, that is the user, whosoever the user which is calling this function will be the message.sender. I'm going into nodes. Now once I'm into nodes, I want to go into content. So first of all, I need to specify which nodes I want. I want nodes for I, the iterator, and I want to access its content. Okay, cool. So now there I will return this thing, return all nodes. Okay, it says that my function has to be view. This keyword means that while I was creating this function is actually taking some sort of input from user and writing data on the blockchain, right? But this function ain't writing something on the blockchain, so there wouldn't be any kind of transaction. So whenever I am interacting with the blockchain, I'm doing some sort of transaction, right? So while using this function, there wouldn't be any kind of transaction, because I'm just reading the data from the blockchain, and blockchains are all transparent. So with this, my code is now completed. As I'm seeing in my compiler settings that I have specified 0.8.19, and the same thing is in my compiler, so compiler settings are all great. Now let's try deploying this thing out. So guys, this thing is remix VM. This means that a virtual machine. So this is a virtual blockchain, so this has no connection with all the existing blockchains. Virtual blockchain is something like kind of a virtual machine, you can guess. These are just simulations of a real blockchain, but are not real blockchains. These are just created instantly. When I click this deploy button, a new blockchain just got created in this thing. So this is for testing purposes. This all thing is for testing purposes, the VM thing. So once I have deployed this, let's test this out. So t1 set nodes, get nodes. Okay, cool. I have this thing in here. Now another node, I got all my nodes. Cool.
So let's change my account. So these are all the available accounts for interacting with this contract. So if I do get notes now, okay, so this is my different notebook. So this different notebook wouldn't be having any of the content in it, right? So I'll be setting, and okay, as we see, we are now able to create our own different notebooks, and all of these different notebooks are now having all of the different notes. Okay, so guys, with this thing, you guys have learned to write a basic Solidity smart contract. So this smart contract wasn't actually very basic. This included a lot of things. This included struct, in mappings, the concept about message.sender, and also like how this view and how the functions are actually interacting on the blockchain. But guys, doing this thing will give you a very basic gist. So now you guys can actually create a basic D app. So most of the D apps actually work on the same principle. You don't need to modify a lot in your smart contract. So now let's move on to integrating this smart contract with the front end, right? So this is a back end. Over here you are testing the back end, but you need something to actually look on your code, right? So for that, first of all, I'll be choosing this injected provider thing. This injected provider means that I am now connected to my MetaMask. So why this is called as injected provider is because MetaMask is actually injecting Ethereum. Ethereum is some sort of code library the MetaMask is injecting in your browser. So that's why it is called as injected provider. All of these, like if I'm talking about Solana, how will I connect to Solana wallet if I'm on a Solana blockchain? Then for that I will be looking for Solana in my browser. So it is now looking for Ethereum in my browser. Now once it has connected, it will be showing me my user account address that is similar to this address. Okay, so now we'll be hitting this deploy. It will be doing some transaction, and guys, someone just robbed like truffle or hard at local testing. No bro, I will prefer you, like if you are a complete beginner then just use this remix. रीमिक्स पर ही तुम अगर डिप्लॉय करते हो तो तुम लोग को सारे के सारे फीचर्स एक्सेस हो जाते हैं. व्हाट डू यू वांट टू वाइल इंटीग्रेटिंग योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद अ फ्रंट एंड. वेट, लाइक लेट मी क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट और जल्दी से दिखा देता हूँ मैं कि कैसे वी विल बी इंटीग्रेटिंग दिस थिंग. तो मैंने एक इंडेक्स बस दिस इज़ जस्ट अ index.html फाइल, एक बॉल प्लेट डाला मैंने यहाँ पे. अब मैं क्या करूँगा, एक इनपुट फील्ड बनाऊँगा. ठीक है, सो दिस इज़ एन इनपुट फील्ड. एक प्लेस होल्डर डाल देता हूँ भाई, तो दैट वुड बी गिविंग मी अ बेटर आइडिया. तो दिस इज़ टेकिंग सम नोट्स. ओके, नोट नहीं, कंटेंट बोल देता हूँ. नाउ आई विल बी नीडिंग अ बटन, एंड दिस बटन विल बी set notes. Now another button which is get notes, and if I just like dispose करके again लाइव चाहता हूँ मैं. आई गेस मैं अपने दूसरे ब्राउज़र पे आ गया हूँ, वापस से क्रोम पे. here तो ये बन गया. now I will be needing a field where I am displaying my code, not code, displaying my notes. Okay, so this thing I write here. Okay, so this input field will be of type text. Cool. and इसको एक ID दे देता हूँ मैं, ID 1, and same मैं एक इस p tag को भी ID दे देता हूँ. Why I'm giving this ID? Because like when I'm writing my JavaScript, I don't need to interact with these buttons. Like these buttons wouldn't be actually needed to fetch something from the HTML world, right? So अगर मैं यहाँ से कुछ fetch करना चाह रहा हूँ तो मुझको कुछ ID तो देनी ही पड़ेगी. ओके cool. अब क्या करना है? ओके, बॉडी का पार्ट ख़त्म हो गया. नाउ यहाँ पे एक बार मैं टेस्ट लिख देता हूँ और देखता हूँ. ओके कूल, कुछ गलती से भी रह गया है. तो अब यहाँ पे मेरे ये स्क्रिप्ट टैग्स आ रहे हैं. तो अब इसके अंदर मैं JS लिखूँगा. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद दिस थिंग, आई विल बी नीडिंग
see, like I will be needing some sort of library, right? तो because like initially with the JS thing, JS से मैं सीधे सीधे अपने MetaMask से नहीं कनेक्ट कर सकता हूँ. I'll be needing this library called as ethers. तो ethers आपकी एक library है, ether.js. तो if I go into its documentation and if I look at the basics, okay, तो यहाँ पे मुझको ये मिल गया है, ये इसका CDN है. CDN is like I am writing my JavaScript using this script tag, and with this script tag I am getting the whole of the library which is used for interacting with a wallet. Okay, cool. अब I need to connect my smart contract with my front end. Okay, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है. इसके लिए we just need to create this two things, const address and const ABI. So the guy who was asking me for this thing, like using truffle or using hardhead, so using truffle or hardhead is used for deploying the contract on the blockchain. Okay, so instead of using these any of these things, you can directly use your remix, which I will be preferring कि like remix से deploy कर लोगे तो remix is way more easier in the beginner level. Or still, like I have been into blockchain for so much time. I have been using hardhead, truffle and all these things in my initial days, but right now I'm only using remix because remix से मेरा सारा का सारा काम हो जाता है. तो why do I need to in order to integrate this smart contract with my front end, I only need this API and address. तो API क्या होता है कि API का मतलब है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कंपाइल्ड फॉर्मेट. अब अगर मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो मुझको ये API मिलता है. नाउ अगर इस चीज़ को मैं गो थ्रू करूँ तो यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये है. ओके, इसको बड़ा कर देता हूँ. एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है. इन तीनों का मतलब क्या है? इन तीनों का मतलब है कि गाइस मेरे पास यहाँ पे एड्रेस टू कलेक्शन एक वेरिएबल है जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है, एक गेट नोट्स नाम का फंक्शन है जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और एक सेट नोट्स नाम की चीज़ है जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ. अब इसका मतलब होता है API का कि API इज़ टेलिंग अ फ्रंट एंड कि व्हाट इज़ एक्चुअली एक्सेसिबल फ्रॉम आवर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. So while if I have declared this thing as private, then the API wouldn't be having this object, where it is, this beach wala object, this wouldn't be present if I have declared this function as private. So this API is only telling us ki what things are actually available to us for interacting with the smart contract. Now I'll be copying this address. This address is the address of the smart contract on the blockchain. And also one more cool thing guys, अगर मैंने जैसे अभी इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करा है पॉलीगन चेन पे, तो दिस इज़ पॉलीगन मुंबई. Now if you're a beginner and if you don't know about this thing, you can just go through this website chain list, and from chain list you can add this polygon Mumbai blockchain to your own wallet. You click on include testnet. Okay, I guess ये मुंबई नाम से अवेलेबल है सिर्फ. yes, ये रही. तो if you click on this add to metamask, this will be getting added to your metamask. Now once you have added a blockchain to your metamask, you will be needing some sort of funds, right, that to in order to pay the gas fees. So for that you can write polygon Mumbai faucet, and this website, through this website you just need to enter your wallet address and some tokens will be dropped on your wallet. So using this thing, so I already have some tokens at the moment, and so this is how you actually add your chain in your metamask wallet. And apart from this, I was telling you about कि भाई क्वेरी कैसे करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर. तुमने कॉन्ट्रैक्ट तो डिप्लॉय कर दिया, नाउ यू वांट टू लुक एट द ट्रांजैक्शंस दैट हैव एक्चुअली हैपेंड थ्रू द एंटायर टाइम विद दैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. तो उसके लिए आई विल बी लुकिंग एट दिस ब्लॉक एक्सप्लोरर. तो ऑल ऑफ द ब्लॉक चेन्स जितनी भी होती हैं, टेस्टनेट्स होते हैं या मेन नेट्स होते हैं, तो एवरी वन हैव दिस ब्लॉक एक्सप्लोरर. तो आई एम गोइंग टू दिस ब्लॉक एक्सप्लोरर इनपुटिंग दिस एड्रेस. तो यहाँ से अब मेरे को दिख जाएंगी जितनी भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हुई हैं, किसी ने अगर टोकन्स वगैरह भेजे हैं, तो एवरीथिंग इज़ विजिबल ओवर हियर. Cool. So now you have integrated. Now in order to integrate your this smart contract, एक बार मैं वापस से जाता हूँ जहाँ पे हम लोग पहले थे. अभी हम लोगों ने क्या करा है, now our contract is like kind of connected. We don't need more things. अब मैं जल्दी से अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को इसके साथ लिंक करता हूँ.
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने ऊपर आईडी दी थी, आई गेस ID1 और ID2 दिया हुआ था। कूल, ID1 now this would be display field। तो अब इनपुट फील्ड के अंदर जो भी डेटा लिखा है वो आ जाएगा। अब वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने 2 बटन्स बनाए हैं। आई विल बी ऑल्सो नीडिंग वन मोर बटन। दिस बटन वुड बी कनेक्ट टू मेटामास्क। ठीक है, अब कनेक्ट टू मेटामास्क के लिए पहले एक फंक्शन बना देते हैं, एसिंक फंक्शन कनेक्ट मेटामास्क। ठीक है, इफ़ विंडो डॉट इथेरियम। तो आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो एक्सटेंशंस होती हैं इथेरियम नाम की एक चीज़ को ना इंजेक्ट करती है हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो पहले मैं कैच करूँगा उस इथेरियम चीज़ को। अगर ये चीज़ है मेरे पास, अगर मेरे ब्राउज़र में इथेरियम है तो हमको एक प्रोवाइडर बनाना है। और प्रोवाइडर का क्या होता है कि लाइक ये जो सिंटैक्स है इसको एज इट इज़ ही लिखा जाता है मोस्टली। आज के टाइम पे भी भाई मैं इसको कॉपी पेस्ट ही करता हूँ क्योंकि मोस्टली ये चीज़ ऐसे के ऐसे ही रहती है हमेशा। प्रोवाइडर का मतलब होता है व्हेन आई वांट टू रीड सम डेटा फ्रॉम द ब्लॉकचेन, तो आई एम यूजिंग अ प्रोवाइडर। ठीक है, तो वंस आई हैव कनेक्टेड विद दिस इथेरियम आई वांट टू रीड द डेटा ऑफ द यूज़र वॉलेट, प्रोवाइडर डॉट सेंड। अब सेंड का मतलब हो गया भाई कि ये वाली रिक्वेस्ट जो है ये वाली रिक्वेस्ट भेजो। कौन सी रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट अकाउंट्स वाली। कॉमा एक एरे। Now I will be able to connect with my MetaMask. Let's try this thing from here on click. I wish कि ये चल जाए। काफ़ी बार HTML CSS की चीज़ें बगी हो जाती हैं। ओके, ये बग कर रहा है आई गेस। आई गेस कि मैंने सिंटैक्चुअल मिस्टेक करी है कुछ। लेट्स गो अहेड। अभी के लिए पहले मैं फंक्शंस बना देता हूँ बाकी के। इफ़ आई वांट टू गेट okay, this isn't working because my MetaMask account is like already connected with this website। ठीक है, so that's why this thing is not working क्योंकि ये already connected है। अब क्या है कि I need 2 kind of functions। पहला set nodes के लिए, दूसरा get nodes के लिए। वेट गाइस, लाइक जितनी भी क्वेरीज वगैरह हैं मैं सबको आंसर कर दूंगा। ऑल्सो लाइक जो बैकएंड में बैठा है प्लीज़ इसको पिन करते रहना, जो भी मेन क्वेरीज है उनको पिन करते रहना। तो आई विल बी लुकिंग एट द वन बाय वन। ठीक है, अब आई अगेन हैव टू डू दिस थिंग। भाई बहुत रिपीटेटिवनेस होती है यहाँ पे, तो आई विल प्रेफर यू कि एक टेम्पलेट बना लो एंड जस्ट यूज़ द थिंग अगेन एंड अगेन। अब इसका मतलब है कि मैं सेट नोट्स में क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा राइट कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं अगर ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा लिख रहा हूँ तो फॉर दैट पहले तो मैंने एक प्रोवाइडर बनाया और फिर मैंने साइनर लिया। साइनर का मतलब होता है कि यूज़र से साइन मांगना हो कि आर यू अलाउइंग दिस एप्लीकेशन टू डू समथिंग विद योर डेटा ऑन द ब्लॉकचेन, तो थिंग्स लाइक दैट। अब मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डॉट सेट नोट्स को कॉल करूँगा। सेट नोट्स नाम का फंक्शन बनाया था ना गाइस, तो अब ये जो सेट नोट्स वाला फंक्शन है मैं इसको यहाँ से कॉल करूँगा। एंड अब सेट नोट के अंदर मुझे एक इनपुट भी देना पड़ेगा ना। मैंने इनपुट फील्ड यहाँ से ली थी, तो मैं इनपुट को इनपुट फील्ड डॉट वैल्यू ऐसे करके मैं क्या करूँगा, मैं इनपुट फील्ड का जो इनपुट है वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ओके वन थिंग दिस हैज़ टू बी ए ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके सॉरी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या करना है कि मुझको एक इथेरियम का इंस्टेंस बनाना है, न्यू इथेरियम ईथर्स ईथर्स डॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ये मेरे इथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एड्रेस API और ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पास करूँगा इसके अंदर। तो ये API आ गई, एड्रेस आ गया। पहले एड्रेस पास करेंगे, फिर API पास करेंगे, फिर उसके बाद में हमें क्या चाहिए, हमें राइट करना है डेटा, तो हम लोग साइन पास करेंगे यहाँ पे।
ठीक है, अब हम लोगों की टी एक्स भी बन गई है। अब हम लोगों ने क्या करा, पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करा ब्लॉकचेन के साथ, कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टेंस क्रिएट करा, ट्रांजैक्शन कॉल मार दी। नाउ वी विल बी वेटिंग टिल द ट्रांजैक्शन इज़ ओवर। फिर उसके बाद में कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे लिख देंगे टी एक्स कम्प्लीटेड करके। अब अगर मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ और सेट नोट्स पे क्लिक करता हूँ तो लेट्स सी ना कंसोल, I guess it is creating some issue with the CDN thing if I'm not wrong. Wait, let me have a look. हाँ, ये देखो syntactual error. This has to be providers, both of the places. Again I guess कोई syntactual error होगा if I just go over here. तो ये मेरे नोट्स है, आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग दिस नोट्स विद यू गाइस। तो यहाँ से यू गाइस कैन जस्ट टेक अ लुक एट दिस थिंग कि हम लोग कैसे बेसिक इंटीग्रेशंस करते हैं। और उसके बाद लेट मी ऑल्सो हैव अ लुक ओवर हियर। हाँ, ये लाइन है जिसको हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। कुछ तो चेंज हुआ। आई गेस फिर से HTML में कुछ बग्स आ रहे हैं, लाइव सर्वर के बग्स हैं या तो मेरे सिंटैक्स के बग्स हैं। वेट, सिंटैक्स, यस यस। ब्लॉकचेन एड्रेस जो होता है यार, देखो ब्लॉकचेन एड्रेस इज समथिंग विच इज़ अ यूज़र प्रोफाइल। अभी ये जो एड्रेस है ना, यही ब्लॉकचेन एड्रेस है। वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन द ब्लॉकचेन विल बी अकॉर्डिंग टू दिस एड्रेस। अब अगर मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तो ये जो मेरा दूसरा एड्रेस है, लेट मी स्विच दिस अकाउंट एंड शो इट टू यू गाइस। तो ये देखो यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन्स दिख रही हैं। तो मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ अपने ब्लॉकचेन पे, वो सारी चीज़ें मेरे ब्लॉकचेन एड्रेस के थ्रू ही हो रही हैं रोशनी। एंड अलॉन्ग विद दिस यूज़र प्रोफाइल इज़ जस्ट लाइक दिस ब्लॉकचेन एड्रेस इज़ एक्चुअली what a user gets. Suppose you are creating your new account on the blockchain. Let me just create a quick account. ऐड अकाउंट पे क्लिक करूँगा, कुछ भी नाम लिखता हूँ मैं, क्रिएट करता हूँ तो एक नया एड्रेस आ गया। तो यही एक यूज़र प्रोफाइल है। हम लोग कुछ भी कर रहे होंगे ब्लॉकचेन पे, अपने वॉलेट से साइन वगैरह करेंगे तो यहीं से होगा, यही है तुम्हारा। तो इज दैट थिंग क्लियर रोशनी? एंड ओके, निसार पूछता है कि आई वांट टू लिंक माय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रंट एंड। तो इन ऑर्डर टू लिंक अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रंट एंड यू विल बी यूजिंग दिस लाइब्रेरी कॉल्ड एज ईथर्स लाइब्रेरी। कुछ नहीं है, बस यू विल बी यूजिंग यू विल बी नीडिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने डिप्लॉय करा था उसका एड्रेस चाहिए होगा, उसका API चाहिए होगा। एंड यूजिंग दिस लाइब्रेरी इन JS you can easily integrate your contract. And along with this ओके, स्टार्टिंग Web3 अभी करेंटली बहुत अच्छा टाइम है Web3 में शुरू करने का, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ hackathons गोइंग अराउंड इन Web3 कॉस्थोप। तो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड इनटू hackathons, टेक अ लुक एट डेव पोस्ट। यहाँ पे आपकी काफ़ी hackathons चल रही होती हैं अब। एंड ओके, तो ये वाली जो hackathon है, दिस इज़ ऑल्सो अ Web3 hackathon। तो मोस्ट ऑफ द हैकाथॉन्स आपकी Web3 होती हैं। इनफैक्ट ये जो लिव द कोड है इसमें भी आपके Web3 के काफ़ी ट्रैक्स हैं। तो Web3 अभी काफ़ी बूमिंग है। तो कॉस्तव, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इन ब्लॉकचेन, दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम। कॉस्तव ऑल्सो आस्क कि इज़ ब्लॉकचेन द डिफाइनिंग कॉम्पोनेंट ऑफ Web3। हाँ भाई, Web3 इज़ Web3, Web2, Web1 बेसिकली ये मतलब है कि Web1 में क्या होता था कि पहले हमारी विकीपीडिया जैसी वेबसाइट्स आया करती थी।
तो विकीपीडिया वेबसाइट्स जो होती हैं, इस टाइप की वेबसाइट से मेरा मतलब है कि जो सिर्फ रीड ओनली वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे यूज़र आगे कुछ नहीं कर सकता, बस डेटा कंज्यूम कर रहा है। फिर तुम्हारे यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स आई, अब यूट्यूब पे डेटा आके इंटरेक्ट भी कर सकता है। अगर मैंने कुछ स्ट्रीम कर रहा हूँ मैं जैसे अभी, तो तुम लोग आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो ना। अब वेब 3 का मतलब है कि यू आर एक्चुअली ओनिंग समथिंग ऑन द इंटरनेट। तो वो हो गया तुम्हारा वेब 3। जब तुम जैसे एग्जांपल लेते हो मेटावर्स मेटावर्स वगैरह का, जैसे सैंडबॉक्स हो गया, फिर जैसे फेसबुक का ही मेटावर्स है, तो यहाँ पे लैंड ओनरशिप जैसी चीज़ें होती हैं, या एसेट्स वगैरह ओन कर सकते हो तुम ब्लॉकचेन के ऊपर। तो दैट इज़ बेसिकली वेब 3। और ये सारी जितनी भी ओनरशिप वगैरह वाली चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये सब तुम्हारा उससे ही होता है, ब्लॉकचेन से। तो ब्लॉकचेन इज़ काइंड ऑफ अ कॉम्पोनेंट। ओह, होल्ड ऑन अ मिनट गाइस। आप लोग की और कोई क्वेरीज हो तो यू गाइस कैन ड्रॉप इट इन द चैट्स। या गाइस आई एम बैक। ओके, तो आई वाज लाइक लुकिंग ऑन दिस कोड। तो अभी इस कोड में क्या था कि एक्चुअली वही वही मेरी सिंटैक्चुअल मिस्टेक्स थी थोड़ी बहुत यहाँ पे। तो आई विल बी गिविंग यू द टेम्पलेट ऑफ दिस कोड। बेसिकली अगर तुम जितनी बार भी तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट को इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें तो तुम्हारी रेपिटेटिव होती ही होती हैं कि यू विल बी नीडिंग अ प्रोवाइडर साइनर एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आफ्टर दैट you will be just calling this transaction using the name of the function from your contract, and then उसके बाद एक बार ट्रांजेक्शन कॉल हो गई। अब जैसे देखो यहाँ पे टी एक्स डॉट वेट का क्या मतलब है कि ये जो ट्रांजेक्शन है, दिस विल बी टेकिंग सम टाइम ऑन द ब्लॉक चेन, तो जस्ट वेट अंटिल दिस ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटेड, सो दैट इज़ टी एक्स डॉट वेट। एंड अभी जो दूसरा फंक्शन है गेट नोट्स वाला, ओवर हेयर अगेन हम लोग इतना जो कोड है, दिस इज़ लाइक क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम लोग एज इट इज़ ही लिखते हैं। फिर उसके बाद वी आर लाइक over here again calling the contract with the get nodes function, but we are not using this tx.wait क्योंकि ज़रूरत नहीं है भाई, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं डेटा। तो once we have readed that text, फिर हम उसके बाद ये जो शो फील्ड हमने लिया था उसमें इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा। नाउ लेट्स हैव अ लुक कि अदर थिंग्स वर्किंग फाइन। अब मैं इनपुट करता हूँ नोट्स 1। ओके कूल, तो ये ट्रांजैक्शन आ गई है। अब मैं इस ट्रांजैक्शन को जैसे ही कंफर्म करा और अब मैं अपने मेटामास्क पे गया भाई, वापस से पुराने अकाउंट पे जाऊंगा, तो ओवर हेयर ये सेट नोट्स दिखा रहा है कि द ट्रांजैक्शन इज़ लाइक करेंटली अंडर प्रोग्रेस, इट इज़ राइटिंग सम डेटा ऑन द ब्लॉकचेन। ठीक है, तो वंस दिस थिंग इज़ कम्प्लीटेड, ओके जैसे दिखा रहा है यहाँ पे कि ये कंप्लीट हो गई है। लेट मी गो बैक टू माई टैब। काफ़ी सारे फालतू के टैब खोल लिए मैंने, लेट मी क्लोज देम ऑल। हाँ, तो ये देखो टी एक्स कम्प्लीटेड। अब अगर मैं फैच नोट्स पे क्लिक करूँगा तो यू सी लाइक ओके, तो ये मेरे पुराने वाले नोट्स को भी फैच कर लिया इसने, अभी जो मैं ऐसा ट्राई वगैरह कर रहा था। ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फैच नोट्स करता हूँ, तो फैच नोट्स क्या कर रहा है कि वेट वेट, हाँ, तो अब मैं अपने डेटा को वहाँ पे भी देख सकता हूँ, यहाँ पे भी देख सकता हूँ। और लेट मी टेक अ लुक। ठीक है, मैं ये वाले अकाउंट से कनेक्टेड हूँ। अब अगर मैं इसकी जगह कुछ और इनपुट कराने की कोशिश करता हूँ, अनदर टेस्ट समथिंग लाइक दैट, सेट नोट्स confirm, I'll be waiting थोड़ा सा again। tx completed, fetch notes,
अनदर टेस्ट। लो गाइस आ गया। तो अभी हमने जितने टेस्ट पहले करे थे और जो अभी हैं सारे के सारे टेस्ट हम लोगों को यहाँ पे फेच करके दिखा रहा है। तो दिस इज़ लाइक हाउ वी विल बी इंटीग्रेटिंग आवर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेसिक एक कॉन्ट्रैक्ट था नोट्स का। अभी जो नोट्स की कलेक्शन है इसी पे अगर एक अच्छा से यूआई लगा दोगे तो दिस इज़ लाइक अ लॉग इन लॉग आउट बटन काइंड ऑफ थिंग, और ये डेटा रखने का और ये डेटा फेच करने का ब्लॉकचेन से। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वर्कशॉप। अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो यू गाइस कैन ड्रॉप। आई एम हियर फॉर लाइक अनदर 2 to 3 minutes. Hey Roshni, in order to interact with your in order to interact with your smart contract, or in order to interact with anything on the blockchain, you will be needing this extension MetaMask. So first of all, this is the only entry thing. So you can get this extension from Chrome Web Store. Okay.